Dr. Mohammad Salman Khan, consultant plastic, cosmetic, and hair restorative surgeons at Cosmetic Expert Clinics, Islamabad and Peshawar. Today we'll talk about a very interesting topic. जब हम भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई आता है तो एक तो खुद उसके अपने माइंड में हजार तरह की सोचें होती हैं, पता नहीं क्या होगा। दूसरा हजार सोचें जो है उनसे लोग डाल देते हैं कि ये होगा, मेरे साथ ये हुआ था, पता नहीं आपके साथ क्या होगा। So I thought I'll make a video जिसमें मैं clearly अपने पेशेंट्स को बता दूं कि उस दिन आपके साथ क्या क्या होता है। So once you know that you're coming to my clinic और आपके साथ ये steps follow होंगे, you'll be mentally relaxed, cool, calm. It's a wonderful day because it's a life-changing day. और इसके साथ आपकी लुक भी बदलती है और आपकी लाइफ भी अक्सर बदल जाती है because hair transplant is a procedure that makes you happy when you look at yourself into the mirror. So we start off with the arrival timings. Normally I start hair transplants early, 9, 10, 11 o'clock. This is the time where I start. चूँकि multiple cases होते हैं तो हम थोड़ा सा gap रख लेते हैं बीच में. But this is the time where I ask the patient to come. First of all, हमने पहले से उन्हें बताया होता है कि get a good breakfast and then come over. If not, clinic में हम breakfast कर लेते हैं. After that, we take pictures. Before pictures, they are very important. क्योंकि वो मुझे clearly idea देते हैं during surgery भी, after surgery भी, post-op protocol में भी. So pictures are a must. Front, sides, top, back, ये सारी हम ले लें. उसके बाद the patient changes into a comfortable OT dress जो sterilized होता है, उनके लिए नया dress खोला जाता है. Some people जिनका second session होता है, they know that it's a long day, तो वो खुद ही trouser और t-shirt में आ जाते हैं. तो ऐसे cases में हम सिर्फ उन्हें extra gown पहना देते हैं, so they are comfortable in their own dress. Then we do the trimming of the hair. Normally, more than 90% of the cases, they are shaved FUE. So shaved FUE जो है उसमें बालों को हम trim कर लेते हैं. We do it right here in our clinic. जो हमारी requirements होती हैं उसी के मुताबिक. After trimming, we pass cannula. Cannula is very important, securing an IV line. इससे हम आपको antibiotic की एक test dose भी देते हैं और फिर एक antibiotic dose before, एक antibiotic dose after. ये दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं because कैनुला में अगर बीच में हमें फ्लूइड्स चाहिए हो हम आपको वो भी दे सकते हैं. अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाए हम उसे भी ट्रीट कर सकते हैं. So cannula is life saving and I recommend that in every patient and we do it in every patient. Meanwhile हो सकता है हम आपको एक मॉनिटर लगा दें जिसमें BP ऑपरेटर्स भी कनेक्ट होता है, पल्स ऑक्सीमीटर भी कनेक्ट होता है. That gives us the stats कि आपकी बॉडी इस वक्त किन vitals से गुजर रही है. After this, we start the hair transplant process. We start off with anesthesia. Let me assure you, hair transplant is not a painful procedure if done in a proper setup under proper plastic surgeon. In our setup, I use very specialized needles, a lot of different gadgets, जिससे हम आपके pain को, anesthesia के pain को minimum कर देते हैं. So you enjoy the day here. And post-operatively भी आपको ज़्यादा पेन नहीं. First of all, we do anesthesia at the back. यहाँ से फिर हम first step शुरू करते हैं, which is harvesting of the follicles. अब harvesting में दो steps होते हैं. One is punching. FUE machine से हम एक follicle को punch out करते हैं. Punching is like छोटी सी drill machine है जो आपके बालों को, hair follicle को surrounding skin से separate करते हैं. So the punching is the first part. उसके बाद another team member comes in and he very carefully plucks them out with their forceps. अब ये दोनों steps मिला के harvesting बनते हैं. यहाँ से हम normally start करते हैं. We go all around. इस बीच में आप एक side पे लेटे होते हैं, दूसरी side पे, and some part upside down. Other surgeons prefer prone positions, upside down for a longer period. So that is the surgeon's preference. I have my own. Since I don't like the upside down position myself, तो इसलिए मैं उसे minimum करता हूँ. इसके बाद it takes about 3 hours, जिसमें हम एक side से लेकर दूसरी side तक. अगर हम बहुत ज़्यादा follicles कर रहे हैं, sometimes it takes longer than that. But on average, it's somewhere between 2.5 to 3.5 to 4 hours. After that,
बाकी का जो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो बहुत मज़ेदार होता है because you're lying straight, comfortable in the chair, watching TV, your favorite season, your favorite movie, news, cricket match, everything. और ऊपर काम चल रहा होता है. So, we do the hairline marking. That is the step. Sometimes I do it in the very start. पेन से हम hairline को draw करते हैं. The one that suits you. I give my patients 2 or 3 options right in front of the mirror. जो उन्हें पसंद आए, मुझे भी पसंद आए, तो हम दोनों के mutual consent से we proceed. Some people like an M pattern of hairline, some people like rounded, some people want temporal peaks, some people don't. But जितने भी possible options हैं, according to the age, according to the number of follicles that we have, वो फिर मैं options patient को दे दूँ. Once we are done with the hairline, उसके बाद we do the anesthesia of the front. So remember, सारा anesthesia एक वक्त में नहीं करते. We just do the back first, and then we do the front after 3-4 hours. Front anesthesia करने के बाद we do the incisions. Now in some cases I do incisions first. In others I do it second. So it varies from case to case, and it's a decision that you let me take. क्योंकि intra-op details जो हैं, everything varies from one patient to another. So I change according to the needs of the patient in order to ensure the best results. Incisions ये हैं कि हम blade के साथ छोटे-छोटे sites बना देते हैं. उन sites में आपके एक-एक बाल को फिर place किया जाता है. Sites making normally takes about 40 to 45 minutes से लेके 1 hour 30 minutes तक, depending on कि हम 2000-3000 बाल लगा रहे हैं, 5000 लगा रहे हैं. After this step, the placing starts. Placing ये है कि 2 or 3 of my team members, they come in with a big follicle work machine. Between the placing and incisions, somewhere we take a lunch break. Proper हम lunch कर लेते हैं, patient भी, the team as well. Everybody is fresh, back to work, placing. Placing normally takes about 3 to 4 hours. At the end of the 4 hours, आपका hair transplant जब complete हो जाता है, इस बीच में हम कुछ planning करते हैं. कभी follicles अगर थोड़े से ज़्यादा हों, we go for the extra incisions. कभी अगर follicles कम हो, we go for the extra harvesting and punching. So I try my best कि मैं हर session में maximum follicles लगा सकूँ अपने patients के लिए, because ultimately more follicles mean a better result, a beautiful result. मैं भी खुश, आप भी खुश. Now when the placing is complete, उसके बाद हम एक dressing करते हैं. The dressing हम donor area पे dressing करते हैं और उसे हम extend कर लेते हैं forehead. We do not dress the recipient area. इसका फ़ायदा ये होता है कि you're able to sleep, क्योंकि when you have had a long day of hair transplant, you definitely need a good sleep. So we give you the final dose of antibiotics, हम कैनेरा निकाल लेते हैं और उसके बाद you're free to go. अब घर के लिए normally I give 2 or 3 instructions. वो भी मैं आज ही आपको इधर बता देता हूँ, because सबसे पहली चीज़ ये होती है that when you're sitting in the car, because of the anesthesia का effect बाद में भी रहता है, because the procedure is not painful at all. गाड़ी में बैठते हुए अक्सर पिलर के साथ लोगों का सर लग जाता है, so you have to be careful while you're sitting in the car. Second, you sleep with 2 pillows, head and elevated rock. बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. It's recommended that you sleep straight. अगर आप थोड़ा बहुत sides पे इधर-उधर हो जाते हैं, it's okay, थोड़ी बहुत माफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं. Prolonged एक ही साइड पर पूरी रात ना सोएं, because this is the first night. You have to be a little careful. Epithelialization takes 24 to 48 hours. उसके बाद you can get back to your normal sleep. जाते ही हम आपको antibiotic painkiller लगा देते हैं. So on the first night, you don't need to take any other medicines. आपने clinic में जो हमने आपको दे दिया, that's enough. Just relax, go home, have your dinner, and take a good sleep. You start with your antibiotics tablets the next day. So this is how the whole day of hair transplant proceeds. और ये ऐसा होता है कि it's a life-changing day and it's a very comfortable day. In the end, all of my patients, alhamdulillah, they're all very happy. शुरू में बहुत इंसान anxious होता है कि मैं ये करूँ या ना करूँ.
किससे करूं, कॉस्ट का फैक्टर होता है, टाइम का फैक्टर होता है, किस सीजन में करूं, a lot of different things are on your mind. But once it's done, everybody's happy. I've never seen a hair transplant patient unhappy on the day of hair transplant. Q, because it's a life-changing surgery. So thank you very much for watching. This is how the whole day of hair transplant proceeds. Stay tuned for more videos, like my channel and subscribe to it. Thank you.